आज हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी, पहली कंडक्टिविटी होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जैसे हमने पढ़ा कि इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर ये बहुत सारे आयंस हैं और इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी आयंस होंगे, द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मगर हम इसको अगर डाइल्यूट कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल ऐड वाटर टू इट? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? These ions now will move farther apart. These negative and positive ion will separate out. And this way, in this cube, there will be less number of ions. And thus, the less number of ions in this per centimeter cube of the solution will lead to less conductivity. So it means conductivity, which is particularly specific conductivity, decreases with dilution. Now, for molar conductivity of a strong electrolyte क्योंकि completely ionized होते हैं, therefore they have very high conductivity. एंड मोर ओवर, जैसे ही हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं यानी उसकी कंसंट्रेशन को कम करते हैं, आयंस बिकम्स फार्दर एंड ड्यू टू विच द इंटर आयोनिक इंटरेक्शन डिक्रीजेस। एंड दिस डिक्रीज इन इंटर आयोनिक इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन देयर फास्ट मूवमेंट। इनकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है एंड देयर इज a little increase in conductivity. They already had high conductivity due to complete ionization, but due to their free movement, their conductivity increases. When the graph is plotted between molar conductivity and the concentration term under the root, तो ऐसे ग्राफ आता है। Already it has high concentration. Now the increase is slow. This is for strong electrolyte. इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं, दैट इज डिबाय अनसागर। इन्होंने इक्वेशन दी कि ये जो कंडक्टिविटी का राइज होता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट। इसको अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये ग्राफ x और y की बजाय लैम्डा एम और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन में प्लॉटेड है। जो स्लोप है दैट इज माइनस बी, तो इसका स्लोप क्या है? माइनस बी। एंड इंटरसेप्ट जहां पर ये y एक्सिस को कट करेगा, जो c है, दैट वैल्यू हियर इज लैम्डा एम नॉट। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वो कुछ ऐसा होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट एज गेट पार्शियली आयोनाइज्ड, so they produces less ion, and the less ion will have less conductivity even at that same concentration where we took for strong electrolyte which was high. Now जैसे ही हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? इनिशियली जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। विच इक्विलिब्रियम? जितने मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डिसोशिएट कर रहे हैं, the same number of moles get associated and thus their number at a particular concentration becomes constant. मगर जब हम सॉल्यूशन में पानी डाल देते हैं तो क्या होगा? सिचुएशन हमारी इससे ये हो जाएगी। Initially the ions were very close and there was the equilibrium. On dilution, the ion becomes farther apart.
अब इन नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर एसोसिएशन विल गेट स्लोड डाउन, जबकि डिसोसिएशन कंटिन्यू रहेगा एंड दिस वे द नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने का मतलब the charge carriers are increasing, so the conductivity will increase. Hence it will follow this kind of curve. There is a sharp increase in conductivity for weak electrolyte like CH3COOH. Now the next point to study is what will be the conductivity of strong electrolyte when the solution is diluted infinitely. अगर हम इस ग्राफ को देखें तो it is a straight line, और इसको अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें where it will cut the y-axis, that value lambda m naught, this value will give us the conductivity at zero concentration or infinite dilution. But for weak electrolyte it is curved, and even when the solution is diluted on high dilution the conductivity is very less, which is difficult to measure. So we cannot find the conductivity of weak electrolyte by this graph. Hence for that we use kohlrausch law. कोलरैश लॉ कहता है कि चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो या चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, जो टोटल कंडक्टिविटी होगी वो होगी कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फर्निश्ड बाय एनी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, as both get completely ionized on dilution, so the conductivity will be the total conductivity carried by all the positive and all the negative ion. Mathematically molar conductivity zero concentration पर कितनी होगी? ये है conductivity of all the positive ion at zero concentration. Here lambda m naught plus is conductivity of one positive ion, one cation, as there is the number of X plus cation, hence this X plus lambda m naught plus will be total conductivity of cation. On adding, lambda m minus is conductivity of one anion, and if X minus is the number of anion, then this will be the total conductivity of all the negative ions. On adding these two, we get the total conductivity of any electrolyte at zero concentration. Let us take an example to understand it. अगर हमें इस weak electrolyte acetic acid की conductivity चाहिए, it means it is the conductivity of one acetate and one H plus ion. This we have to find out, and let the conductivity of sodium acetate is given, which is the conductivity of acetate and Na plus ion. Let this value is X. Conductivity of HCl is given, that is the conductivity of H plus and Cl minus ion. Let this one is Y. Conductivity of again one more strong electrolyte, NaCl is given, that is the conductivity of Na plus and Cl minus ion. Let this one is Z. अब हमें एसिटेट और H प्लस आयन चाहिए, जो कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में है. सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, मगर इनको ऐड करते ही द वैल्यू x प्लस वाई को ऐड करते ही हमें ये दो आयंस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन इन थर्ड इक्वेशन. तो थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर दो. सो दिस वे Na प्लस Cl minus conductivity कट जाएगी, and the remaining conductivity will be conductivity of acetate ion and H plus ion, and this way we will get the conductivity of weak electrolyte CH3COOH. Numerically it will be X
plus y minus z.